This is an engine oil and it has two different kinematic viscosity ratings. So the low grade basically defines how thin your engine oil is at lower operating temperatures. Let's say during cold starts, okay, because there you want your engine oil to lubricate your engine as fast as possible under certain tolerance limits, okay. And the same is the case with the higher grade, but for the higher operating temperatures where the metal components expand as they absorb heat, they increase the temperatures, and you want that engine oil to behave thicker at those temperatures so that the metal do not have friction between them, and you do not want your engine to get seized at higher temperatures. That's why they have higher grades. Okay, so this is one thing that you should keep in mind if you use mineral engine oil. Well, that engine oil is basically a refined petroleum or say refined crude oil, which contains paraffin wax compounds. Even if it's refined, it does have a few paraffin wax compounds that might thicken out the engine oil at lower operating temperatures, and as I just explained, you wouldn't want that to happen with your engine. I'll be discussing about the properties of engine oils, but उससे पहले हम लोग न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं, जो कि जहाँ पे कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जिनमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो फ्लूइड रहता है उसकी सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज होती है, not the viscosity itself. Viscosity remains constant in that fluid. Okay. अब इसका फॉर्मूला रहता है tau is equals to mu into du upon dy. Mu is the viscosity, tau is the shear stress and du upon dy is the velocity gradient, और यहाँ पे mu constant होता है. Okay. अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, तो इनमें अलग अलग बाइफर्केशंस रहते हैं. ओके, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ये वो फॉलो नहीं करता. इनमें जो बाइफर्केशंस रहते हैं वो ऐसे होते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम इंडिपेंडेंट में आता है शेयर थिनिंग एंड शेयर थिकनिंग, और टाइम डिपेंडेंट में आते हैं थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक. ओके, अब इनके बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स रहते हैं, ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर रहते हैं इनके. लाइक जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंजन ऑयल्स की बात करूँ तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स रहते हैं, है ना, बट बेस फॉर्म में ये न्यूटोनियन रहते हैं. अब वो सब कैसे होता है, ये नॉन न्यूटोनियन कैसे बनता है, इसमें एडिटिव्स वगैरह ऐड किए जाते हैं बहुत सारे, है ना, फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ओके, तो अब जब ये नॉन न्यूटोनियन में बन जाता है तो ये होता है सूडोप्लास्टिक, विच इज बेस्ड ऑन शेयर थिनिंग एंड इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो इसका विस्कोसिटी घट जाता है, इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस. ओके, तो और ये जो ग्रेडिंग्स रहती हैं ये टेम्परेचर बेस्ड भी रहती हैं ड्यू टू दोज एडिटिव्स. ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. Mineral engine oils are essentially long hydrocarbon chains with polymers additives blended in to provide stability across a range of operating conditions. ठीक है, these additives serve specific purposes जैसे कि प्रोटेक्शन, जिनके लिए यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, कोरोजन इनिबिटर्स, एंटी-वेयर एजेंट्स ZDDP, विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन मेटल पार्ट्स. बेसिकली जिंक का एक लेयर रहता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है. एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स, क्लीनलीनेस के लिए डिटर्जेंट्स, डिस्पेरेंट्स, और परफॉर्मेंस के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर्स, पोर पॉइंट डेप्रेसेंट्स, फ्रिक्शन मॉडिफायर्स, स्टेबिलिटी के लिए फोम इनिबिटर्स, इमल्सिफायर्स, एसेट्रा. ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में. व्हाई दीज इंजन ऑयल्स यूज कोरोजन इनिबिटर्स एज एन एडिटिव जबकि ये हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं है. ओके, इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में. नाउ कमिंग डाउन टू द सिंथेटिक इंजन ऑयल्स, वेल दीज are made of PAOs, esters and alkylated aromatic compounds, and these provide better lubrication because they have higher thermal stability, higher oxidative stability, they have better film strength, they have higher volatility, and these have higher viscosity index improvers, and because they are more thermally stable in the base form as compared to the mineral engine oils, they use lesser additives and that's why they last longer. Okay, but before I conclude this video, I'd like to suggest you one preventive tip for the summer seasons, to not to rev your engine during these conditions, because even though you use a synthetic engine oil, it may degrade and lose its thermal stability and break down faster than usual. So
That's all I had to say. Now, thank you and follow for more.